Hello everyone, कैसे हैं आप सब? My name is Aman and this video is brought to you by Psychologic. The name of this module is Developmental Psychology and we are going to cover basics of developmental psychology, which includes various domains of development, various characteristics of development, what is the difference between growth and development, and so on. I'm going to cover the syllabus with a lot of case studies and examples so that you can have a better insight of the topic. Also, you'll be receiving comprehensive yet crisp and systematic lecture notes. So stay tuned and make sure you watch the complete video to know how to get access to free lecture notes. So developmental psychology, or say lifespan development, is made up of two words. Lifespan, matlab lifelong, and development, that is any qualitative change in physical, cognitive, social or emotional context, which means the qualitative changes that are happening in our body throughout our life. Lifespan development also explores how people grow, how people learn, how people change from conception to old age. We are going to study the various stages and transitions that occur during the course of a human lifespan in this particular module. Here you can have a look on the definition by American Psychological Association of lifespan development. So now that you are talking about development, it's important to understand the difference between growth and development. Development, as I said, is a qualitative change, whereas growth is known to be observable, what we can see through our eyes, and quantitative change. Let's understand it by the story of Ram and Shyam. So Ram has a very healthy lifestyle. He eats healthy, he takes vitamins, he gets better education, he's indulged in sports activities, and he has a lot of friends. He likes to socialize. Whereas Shyam, he doesn't really have a healthy lifestyle. He eats junk food, he doesn't go to school, he hates to go out, and is always on phone. And he is totally introvert. That means he does not like to socialize. So let me ask you a question here. Who among the two are developing and who is just growing? Absolutely right. Here you can see Ram has a better quality of life, which is not only good but necessary. Whereas Shyam isn't really developing his life. Oh well, he is living his life for sure, and that too on his own terms, but that will not lead him towards development. So let's dive deeper into what development is through domains of development. So as I said, development is social change, physical change, emotional change, cognitive change, etc. So let us start with social change. So society is built upon certain value systems or ideas. We call it social order. Human interaction leads to the disruption of the maintained social. So what does it mean when I say this? It means we are in the verge of exchanging ideas, values, culture and ethics. Disruption is acquainted with negativity or positivity. However, as society is constantly developing and innovating, change and disruption is not only inevitable but needed. अब example के लिए, when you are upset about something, it is often suggested that to go out and interact with people. They can be your friends, they can be your family, even strangers. If you do so, you will not only get to encounter different perspectives, but it also promotes sense of safety, belonging and security. And there are many studies as well that suggest the same. You can have a look in a detailed form in the notes. Coming to physical change. In puberty, children get taller, stronger, sharper. That's where Bonvita comes in. Physical changes in lifespan development refers to the biological transformations in a human body. ये changes infancy से लेकर old age तक होते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था. और coming forward to emotional change. Now, emotional changes refer not just to learning, understanding, recognizing the emotion, but also managing your own feelings and emotions. They can occur in different stages of life, such as puberty, illness, stress. They can affect one's mood, behavior, or quality of life.
ये टेम्पररी भी हो सकते हैं, ये परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, ये माइल्ड भी और सीवियर भी हो सकते हैं। ये बेसिकली आपके हार्मोन्स, केमिकल चेंजेस और इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है। चलो एग्जाम्पल के लिए, पता है मैंने शिफ्टेड आउट ऑफ माई हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई डिडंट न्यू हाउ थिंग्स वर्कड, आई वॉज वेरी न्यू टू ऑल ऑफ द थिंग्स। ऐसा सबके साथ होता है जो पहली बार खुद के पैर पे खड़े होने निकलते हैं। आई फेस्ड सिचुएशंस दैट रियली चैलेंज्ड माय पेशेंस, रियली, but in a way it eventually made me stronger. Now that I see it, does it mean I'm grown muscles by that? No, it means I've learned to manage my emotions. Here आगे बढ़ते हैं, cognitive change. Now there's this age, पता है, when you can learn very quickly. That's because you're developing your cognitive skills at that time. ये एज आपकी प्यूबर्टी से लेकर अराउंड 21-24 तक होती है। Cognitive change in lifespan development basically refer to any kind of transformations in an individual's thinking abilities, memory, problem-solving skills, or intellectual capabilities as they progress through different life stages. So ये सारी चीज़ें basically है क्या? आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ बढ़ रही है, आपकी मेमोरी बढ़ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ रही है, तो ये सारी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर आती है। So our next topic would be characteristics of development. Now, characteristics of development or lifespan development are the special qualities or features that describes how people grow, how they change, and learn as they get older. सबसे पहले, development is lifelong. Development is something that happens from the time when we are born until the time we die. Or we get old, मतलब we keep learning, changing throughout our lives. अब आप लोगों ने अल्जाइमर डिजीज के बारे में सुना होगा, सबने सुना होगा। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को टाइम के साथ डिस्ट्रॉय करता है, और जैसे ही आप एज करते हो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। मतलब दिस इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन जहाँ कुछ प्रोटीन बिल्डअप्स के कारण ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में एमिलॉइड प्लेक्स एंड टाउ टैंक भी कहते हैं। एज ऑफ नाउ इसका ऐसा कोई नोन ट्रीटमेंट नहीं है, इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, ये आपको समझाने के लिए कि जो डेवलपमेंट होती है वो कभी भी रुकती नहीं है। अल्जाइमर डिसीज इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इंसान की ग्रोथ किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, जैसा कि हमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल चेंजेस। अब एक और केस आप देख सकते हैं इसका। अब कुछ ऐसे भी नाम होने वाले आगे आने वाले केस स्टडीज में, जिसके नाम थोड़े से वियर्ड होने वाले। सो मैं हर एक का नाम एज इट इज तो नहीं बोलूँगा, आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। सो देयर इज दिस गाय टेड, जो कि बहुत ब्रिलियंट पैदा हुआ था, ब्रिलियंट, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बट वाई? हिज डेवलपमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल फैक्टर्स। कैसे, मैं समझाता हूँ। Ted was born with a very high intelligence, but he also experienced trauma at a very young age when he was hospitalized with a serious allergic reaction. This likely had a profound impact on his development, both emotionally and cognitively. तो आपने देखा कि हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन एक फैक्टर ने इसकी लाइफ पूरी तरह से बदल कर रखी। और क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये हॉस्पिटलाइज था, इसे सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन नहीं पाए। आगे बढ़ते हैं। सोशल इमोशनल फैक्टर, सोशल सपोर्ट की कमी की वजह से उसके फ्यूचर में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, पहले वो किसी रीजन से हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बंद हुई, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, इसलिए सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में
कुछ फ्रेंड्स नहीं बन पाए, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं बन पाए उसको सोशियो इमोशनल फैक्टर्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि सोशल सपोर्ट की कमी की वजह से फ्यूचर में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया उसे। जैसे कि मैंने कहा, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ एन इंडिविजुअल विल डेवलप। अभी अगर आपको किसी डिसऑर्डर का सामना करना पड़ रहा है तो उसका फैक्टर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से हो, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। समटाइम्स वी गेट बेटर एट सर्टेन थिंग्स while not getting better at others. Different dimensions of development expand and shrink at different times. For example, अर्ली चाइल्डहुड के बाद एक टाइम होता है जब आपकी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज एक्वायर करने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन अब आप देखो कि एडोलसेंस में आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की एबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अपने शेरलॉक होम्स की वो पुरानी वाली एनिमेटेड सीरीज तो देखी होगी, अगर नहीं तो भी मैं समझाता। शेरलॉक अपनी यंग एज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ था, लेकिन सोशल स्किल्स बहुत बुरी थी उसकी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थोड़ी सी तो डिक्लाइन हुई, लेकिन उसके सोशल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे। Now, this particular case illustrates how the dimension of development can expand and shrink throughout the life. It also shows how different dimensions of development can interact with each other. एक और एग्जाम्पल हो सकता है शेरलॉक होम्स का ही। अभी जो अपन रिसेंटली जो हम सीरीज़ देखते हैं, फिर जो नॉर्मल सीरीज़ है, उसमें आपने देखा होगा जब शेरलॉक होम्स को किसी पर्टिकुलर केस पे बहुत डीपली काम करना होता है, बहुत डीपली सोचना होता है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है एक ही रूम पे बंद कमरे में और वो सोचता रहता है। सो ये ऑब्वियसली फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे याद रख सकते। फिर नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिसिटी। नाउ प्लास्टिसिटी इज द कैपेसिटी टू चेंज। अब कितनी जल्दी चेंज हो सकता है। अब रिसर्चर हैव फाउंड दैट कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ ओल्डर एडल्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू ट्रेनिंग and developing better strategy. However, possibly we possess less capacity for change when we become old. तो मतलब हम जितने ज़्यादा यंग एज में रहेंगे हमारी प्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिक्शन कैरेक्टर्स। डोरा द एक्सप्लोरर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। Now, Dora the Explorer is a very good example of plasticity in developmental psychology. Dora is a shy girl who learns to be more outgoing throughout the series. This is an example of plasticity, which is the capacity to change and development. People can change and grow throughout their life, even in old age. लेकिन obviously थोड़ी decline हो जाती है old age में plasticity की capacity. अभी Dora's journey is a reminder that we are not stuck in our past and that we can always change and grow. She is the role model for children and adults alike, showing us that anything is possible if we set our minds to it. Then comes development is multidisciplinary. Developmental psychology is a multidisciplinary field that studies how people change, grow throughout their life. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था एग्जैक्ट कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एक ह्यूमन डेवलप करता है। Now, a case of a young girl who was kept in isolation for most of her life illustrates the multidisciplinary nature of developmental psychology. The name of this girl was Jeannie. Jeannie was able to speak or walk when she was finally discovered, but she was able to make significant progress in her development. She learned to speak, walk, and even read. This is the reminder that development is a complex process that is influenced by a variety of factors. And the developmental scientists from different disciplines work together to understand how people can change and grow throughout their life even after experiencing significant trauma. Did you know that there's this research which says that
older adults who maintain their cognitive abilities and social relationships are more likely to report high levels of life satisfaction. This is because cognitive abilities and social relationships are the two of the most important factors that contributes to a person's overall well-being. तो अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको लाइफ से satisfied रहना है, तो make sure you maintain your social relationships and do not stay in isolation. The next is development is co-construction of biology, culture and innovation. अब यहाँ 3 फैक्टर्स के बारे में बताया गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, cultural factor और innovation factor. Biological factors includes our genes, physical environment, etc. Cultural factors, आप सभी को पता है, our values, our beliefs, our practices in this society. And individual factors, these includes our personality, our choices, our experiences. And these 3 factors interact with each other to shape our development. Now again, a study by some researcher found that individuals who were able to actively choose their environment, the things that optimize their life, were more likely to experience positive developmental outcomes. So that's all for today's lecture. You can download the notes from the link given below in the description. In the next lecture, we are going to discuss the following topics. Thank you for watching.